Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. In last class, we study about the practice set 5.3. Now we continue the next part as probability of an event in given page number 122. See here, probability of an event. Let us think of a sample experiment. See here, what is probability of an event? For a random experiment, if sample space is S and A is an event, then the probability of A is P of A, and it is given by the following formula. The probability of an event A is equal to number of sample point in event A. Number of sample point in event A divided by number of sample point divided by number of sample point in sample space, right? तो इसे हम number of sample point in event A, n of A divided by n of S. Number of sample point in a sample space is n of S. So P of A is equal to n of A divided by n of S. तो probability का फार्मूला है, probability of an event is equal to n of A. N of A means number of sample point in a event A is divisible by number of sample point in sample space, right? N of A divided by n of S. तो देखो, probability of an event is equal to n of A divided by n of S. एक प्रॉब्लम करके देखेंगे हम. Suppose we throw a die, then the sample space will be, तो कितने आउटकम्स रहेंगे डाइज में? तो कितने रहेंगे? टोटल 6 रहेंगे. तो n of a sample point on a sample space is equal to 6. तो इवेंट ए क्या देके रखा है? एन इवन नंबर. तो इवेंट ए क्या है? इवेंट ए इज गिवन एन इवन नंबर, एंड इवेंट बी क्या देके रखा है? एन ऑड नंबर. तो देखो, इवेंट ए इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का सैंपल स्पेस लिखो 2 4 6, राइट? तो n ऑफ ए इज इक्वल कितने होंगे आउटकम्स? 3 होंगे, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू n ऑफ ए, एंड सैंपल पॉइंट ऑन एन इवेंट ए इज डिविजिबल बाय सैंपल पॉइंट ऑन ए सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में कितने हैं? n ऑफ s इज इक्वल टू 6. तो n ऑफ a is equal to 3 and n of s is equal to 6. 3 ones are 3 twos are 1 by 2 is the probability of an event A. And event in event B, see here, an odd number. तो odd number कितने हैं वो B में लिखो आप. B sample space 1 3 5, right? तो n of B means sample point on an event B is equal to 3. Therefore, probability of an event B is equal to n of B divided by n of S. Event, the sample point on an event B is divisible by sample point on a sample space, right? N of B is 3 and n of S is already taken. N of S is equal to 6. So answer is
1 by 2. The probability of an event B is equal to 1 by 2. Next, we go to solve the example. See here, in page number 123, they give one. See here, example 1. See here, they give one. Find the probability of the following when one coin toss. So, when one coin toss, राइट. तो सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट. तो n ऑफ s इज इक्वल टू 2. तो इवेंट देखो, फर्स्ट इवेंट, तो इवेंट ए आप लिखो गेटिंग हेड. तो सैंपल स्पेस एस, हेड और टेल आएगा. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2. तो इवेंट ए क्या है, गेटिंग हेड. तो सैंपल स्पेस में लिखो हेड इज ओनली 1, राइट. तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ ए मीन्स sample point on an event, okay, and n of s means the sample point on the sample space. N of a is 1 and n of s is 2. Next, second, getting tail. Getting tail. इसे event b रखो, राइट. लेट इवेंट बी बी गेटिंग टेल. तो बी सैंपल स्पेस में लिखो ओनली टी, राइट. एन ऑफ बी सैंपल पॉइंट ऑन एन इवेंट बी इज इक्वल टू 1, राइट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ बी इज 1 एंड एन ऑफ एस इज 2. अगेन we get 1 by 2. Probability of an event B is equal to 1 by 2. See the question number 2 in solved example. If one die is ruled, then find the probability of each of the following event. See here, question number 2 is given. One die is ruled, then find the probability of each of the following. तो सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, तो डाई रहने के बाद 1 2 3 4 5 6, राइट. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑन ए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6, राइट. फर्स्ट देखो क्या है, इवेंट ए क्या देख रहा है, देखो प्राइम नंबर ऑन द अपर स्पेस. तो लिखो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, राइट. तो इवेंट ए का सैंपल स्पेस लिखो, राइट. प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5, राइट. N of A, number of sample point on an event A is equal to 3, right. The probability of an event A is equal to N of A divided by N of S. N of A means number of sample point in an event A divided by number of sample point in sample space. The answer is 1 by 2. 3 1s are 3 2s are. Next, second, event B. The given number on the upper face is even. Numbers in upper face is even, right.
तो प्रोबेबिलिटी और सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू इवन नंबर लिखना है तो 2 4 6 राइट देयरफॉर n of b is equal to 3 right n of b means number of sample point on an event b then probability of an event b is equal to n of b divided by n of s 3 divided by 6 is equal to 1 by 2 तो ऐसी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है See here, next solved example 3. The given a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of each event. The card is drawn is a red card or a face card. Right? तो solution of third question तो मैंने पहले ही बताया था आपको तो one card play having total number of cards are 52 and there are four types of card every type of card is 30 तो लिखो S is the sample space right तो डायरेक्ट लिखो ऑफ n of S is equal to 52 तो इवेंट ए क्या है देखो ए रेड कार्ड तो टोटल रेड और ब्लैक कार्ड कितने रहेंगे टोटल रेड कार्ड 26 रेड कार्ड रहेंगे और 26 ब्लैक कार्ड रहेंगे ओके इवेंट ए रेड कार्ड राइट तो टोटल रेड कार्ड्स आर 26 तो n of a is equal to 26 probability of an event a is equal to n of a divided by n of s 26 divided by 52 right 26 ones are 2s are 1 by 2 next event b see here event b card is drawn is a face card तो फेस कार्ड कितने रहेंगे हर एक इसमें 3 रहेंगे ओके फेस कार्ड तो फेस कार्ड कौन से रहेंगे जैक क्वीन एंड किंग ओके फेस कार्ड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12 right therefore probability of an event b is equal to n of b divided by n of s so 12 divided by 52 3 is 3 divided by 30 okay so next remaining solved example you do if suppose any doubt then ask me next we go to practice set 5.4 in that question number 1 see here if 2 points are twice find the probability of the following events तो उसमें फर्स्ट इवेंट क्या है देखो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड सेकेंड गेटिंग नो हेड तो देखो तो व्हेन 2 points are twice the solution of question number 1 see here 2 points are positive then sample space S is equal to head tail head और tail आएंगे राइट आउटकम्स तो
n of s is equal to 4, right? तो इवेंट ए क्या देख रहे हैं, देखो गेटिंग एटलीस्ट वन है, गेटिंग एटलीस्ट वन है, राइट? गेटिंग एटलीस्ट वन है, तो sample space of an event A is equal to getting at least one head. तो H G T H, right? तो n of A is equal to 3. Number of sample point on an event A is equal to 3. Then probability of an event A is equal to n of A divided by n of S. N of A means number of sample point on an event A, right? N of S means number of sample point in sample space. So n of A is equal to 3 and n of S is 4, right? So event B, नेक्स्ट इवेंट भी क्या देख रखा है, देखो गेटिंग नो है, गेटिंग नो है, राइट? तो इवेंट बी का सैंपल स्पेस लिखो तो ओनली टीटी आएगा. सी इन एवरी केस देयर विल बी हेड, इन ओनली दिस केस देयर इज नो हेड, ओनली टेल, राइट? तो n of B is equal to 1, right? So next, probability of an event B is equal to n of B divided by n of S. n of B is 1 and n of S is 4. इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. See here, question number 2 in practice set 5.4. The given, if two dice are ruled simultaneously, find the probability of the following events. The given 3 events. Okay, first events देखो, the sum of the digit on upper face is at least 10. The second देखो, the sum of the digit on the upper face is 33. And third is the digit on the first die is greater than the digit on second die. तो क्वेश्चन क्या है, इफ टू डाइज आर रूल्ड साइमल्टेनियसली. तो सैंपल स्पेस लिखो फर्स्ट. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट? 2 are ruled simultaneously, right? Then sample space will be 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, right? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1. तो देखो टू डाइज रूल करने के बाद हमें टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, 36 आएंगे. तो इसलिए मैं ये सैंपल स्पेस लिख रहा हूं. 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 6. Next and last one, 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, राइट। तो देखो कितने नंबर, इफ two dice are rolled simultaneously then the outcomes will be 36, okay। तो n of s is equal to 36, राइट। तो आप लिखो, मैं इसे अरेस्ट करता हूं, ओके। See here, n of s is equal to 36. Then event A. See here, event A is given. The sum of the digits on upper face is at least 10। तो सम ऑफ डिजिट करने के बाद हमें मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम चलेगा, राइट। तो सैंपल पेस ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू, देखो 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6। तो देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n of a is equal to 6, right। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट a is equal to n of a divided by n of s, राइट। तो देखो इवेंट a क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एट लीस्ट 10। तो 10 से ग्रेटर होना और इक्वल टू 10 रहेगा तो चलेगा। 4 + 6 is 10, 5 + 5 is 10, 6 + 4 is 10, 5 + 6 is more than 10, 11, 6 + 5 is 11, again 6 + 6 is 12, right। तो n of a, sample point on an event a is 6 and p of a, probability of an event a is equal to n of a divided by n of s। तो 6 and n of s is 36, 1/6, right। तो next, event b, sum of the digit on upper face is 33। तो sum of the digit on upper face is 33, right। तो 33 is impossible, right। तो हमें 6 + 6 is 12, लास्ट नंबर is 12। तो n of b is equal to empty set or you write here pi, right। तो probability of an event b is equal to n of b divided by n of s, 0 divided by 36, answer is 0। Next, we go to event c। So event c, see here, event c is given the digit on the digits on the first die is greater than the second, right। तो इवेंट सी क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड, राइट, सेकेंड डाइज। तो फर्स्ट इसमें, तो फर्स्ट डिजिट ग्रेटर रहना चाहिए। तो सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट सी इज इक्वल टू, तो 2 1 सी है, 1 is greater than 2 is greater than 1, 2 1
3 1 3 2 3 2 4 1 4 2 4 3, right? Next 5 1 5 2 5 3 5 4. Next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, right? तो n of c is equal to, तो काउंट करो कितने होते देखो, तो n of c is equal to 15, right? Next probability of an event c is equal to n of c divided by n of s. तो n of c is equal to 15 divided by n of s is 36. 3 5s are 3 12s are 5 by 12 is the answer, right? Probability of an event c is equal to 5 by 12. Next we go to third question in practice set 5.4. The given there are 15 tickets in a box, each bearing one of the number from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of an event that the ticket drawn shown an even number shows a number which is multiplied by 5. तो थर्ड क्वेश्चन देखो, सैंपल स्पेस, तो कितने टिकट्स है 15 से, एंड एवरी कार्ड है 1 to सीरियल नंबर 1 to 50 नंबर, राइट? सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, right? As the sample space is given and number of sample point in sample space is 50. तो इवेंट ये क्या है देखो, shows an even number, right? तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 15 cards and the card have the numbers 1 to 15, that is the n of s is equal to 50. तो इवेंट a क्या है, shows an even number. तो सैंपल स्पेस of an event a is equal to shows an even number. तो कितने रहेंगे even number, 2 4 6 8 12 14, right? 3 6. तो n of a is equal to 6. Number of sample point on an event is equal to 6. So next, therefore probability of an event a is equal to n of a divided by n of s. So n of s is 50 and n of a is 6. 6 divided by 15, 2 by 5, right? Sorry, here 10 12 14, n of a is equal to 7 by 50. Sorry, 2 4 6 8 10 12 14 is the even number, right? So n of a is equal to 7 by 50. Next, event b. See here, event b given multiple of 5, right? So sample space of event b is equal to, तो कितने रहेंगे मल्टीपल, 5 के मल्टीपल 5 का टर्म 5 10 and 15, 5 10 15, right?
तो n of b is equal to 3. Next, probability of an event b is equal to n of b divided by n of s. n of b is 3 and n of s is 15. Answer is 1/5. राइट. तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके.